Hello everyone, welcome to another episode of Seek to Forest. In this episode, I, Gaurav Gupta, Chief Growth Officer at HSF Foundation, will be talking to Pankaj Agarwal, founder and CEO at TagHive. Pankaj is a distinguished leader and a Fortune 40 under 40 with more than 75 patents under his name. His organization TagHive has a mission to transform learning and has built Class Saathi, a learning solution to improve student engagement, learning outcomes, and teacher effectiveness. In this conversation, you can listen to Pankaj talk about what was their journey of making classrooms interactive, why their solution and approach has pull in it, and what does it take to evolve a solution that people want. I was really inspired by their user centricity, and I hope you unlock a lot of possibilities listening to this conversation. Happy listening. Hello everyone, with me today is Pankaj Agarwal, who's the co-founder and CEO of TagHive. Just to introduce Pankaj, Pankaj is Fortune 40 under 40 and has more than 75 patents under his belt. Now, that's a huge number. And besides that, of course, prior to TagHive, Pankaj has played a role in many corporates. At TagHive, when he founded the firm, the intent was to really open up opportunities for students, parents, teachers, and even the community to connect with each other so that they could pretty much work towards improving the learning outcomes of children in the country. And the company works both in India and in South Korea in terms of taking things forward. And there are around 4,000 plus schools which are already associated with leveraging the solutions that TagHive has to offer. So welcome, Pankaj. Thank you for making time. Well, thank you so much, Gaurav. It's a pleasure to be here. I've heard about your podcast. I've heard some of those. I think you're doing a great job by asking people to come over here and share their learnings, their experience. So knowing by sharing is something that I really connect with. And I hope to be as sincere, as honest as possible in my responses so that the Janta really gets what they want, not the made up version. It's going to be very, very original, very, very to the point. So thank you so much for having me again and look forward to your questions and the conversation. Thanks, Pankaj, for that. So Pankaj, diving in, basically wanted to understand the origins of your journey. What led to the birth of the idea? Were there problems that you saw around yourself, or it comes from some, deep-rooted beliefs or values that kind of led to the beginning of the journey at TagHive? So let's go back to the origins and why don't you talk about that? Yeah, I've been thinking about it also at times that why did I start? I think it was a combination of factors. So I studied in IIT Kanpur. I went to Seoul University for my master's, and I also did my MBA from Harvard. So having studied in 3 countries, I realized that education is something that can unlock a lot of possibilities. And hence, I really became the guy who believed in the power of education. And as a professional, I was working at Samsung on technologies. So what happened was I found exciting technologies that Samsung was working on. I was in the headquarters, the South Korea headquarters of Samsung, where I could really have access to a lot of technologies that the world even didn't see so far. So that access to technology and my interest in education were the 2 prime factors that led me to do what I'm doing right now. So what happened is I realized, and also I went to schools in India, I found that there is so many things that need to be done. So generally technology makes learning better. But what I found back then was technology was mostly made for the community that already had a lot of things. I wanted to build technologies or bring technologies to the community that didn't have technology. So that was a huge challenge. So I found a lot of opportunities to go to schools, look at things, be in the problem space for some time. And then all of that, the idea of education, the belief in technology, and the visit to all these schools really led me to, as a Sangam, as we call it, Sangam of 3 things that came together and I started. And it has been very, very sort of organic. There was no push or anything of that kind, very, very organic. I naturally came out of my own sort of larva, if you will. And I'm still enjoying the process because it's a very tough task that I've taken on to myself. Very, very tough, but equally exciting, equally promising. So that is how it started. And that is what is continuously driving me forward as well. Right. Well, that's very well said, Pankaj. So what were the
first set of issues or the problems that you saw as you went in, which led to the shaping of the early days at TagHive? So I was stationed at South Korea, and यहाँ पे internet is super fast. So the general idea was that anything I would build would have good internet connectivity. So when we built the first version of our product and we went to the schools in India, I still remember distinctly, 2018 or so, I went to Varanasi district and deployed the solution. Big failure. Okay. In the sense that the app was working very fine, system was working very fine in Korea, but when you go to India, the connectivity was not so great. So things would not work. So immediate realization that whatever we need to build should be internet free. Initially, of course, when I visited the schools, I found that almost all the teachers had smartphones. So idea was, we will build something for a smartphone. Teachers ke smartphone hai, and then we'll build our own devices, that's clickers, what we call them, and we will make it work. So it used to work. Like aisa nahi ki bilkul kaam nahi karta tha. It worked at that time, but there were a lot of hiccups. And then second thing was also the user interface. We bought a lot of ideas from what we see every day, right? That is very natural. But when we went to the ground, we realized, no, we have to actually station ourselves here, be here to really understand what UI will work for the people here in India. So those two things were big. And of course, there were a lot of offshoots of those elements. So very important learnings early on, so that we didn't spend too much time building things that we would really later on waste. So we had that idea, and hence our entire system at TagHive, the Class Saathi product that we have built, is working without internet connectivity in the classrooms, so that teachers don't have to spend time waiting for the data to load, or they won't have to struggle, right? Even the UI is designed that way. So any screen would only have one option to click. That is the best option. So we really made sure that we understand how they are using it. Even now we do it. We think we are not perfect yet. There is a lot of areas we need to work on. And now that we're expanding beyond UP, we have gone to MP, to Himachal, to pretty much all pockets of the country in some forms. We realize that different areas again have different needs. We're still like struggling with that, but I think it is doable. And we have a good team now of around 40 people as of today, March mid. But I think, yeah, it is a constant process. So those learnings are useful, and we continuously keep on learning. So we send field focus groups on the ground every now and then to go and learn, talk to teachers, interview them, be there. Many school principals and teachers tell us, sir, आप ही लोग खाली आते हैं, बाकी एडटेक कंपनीज नहीं आते हैं हमारे पास. तो we believe in you because आप लोग खाली बना के छोड़ नहीं दिए हम लोगों को. You're actually hand-holding us, giving us more inputs, getting ideas from us, building for us. तो वो भी अच्छा एक मतलब it feels good, but I hope we are able to do this more often. So very good experience overall. I think challenge है, but equally exciting. The team is excited कि अरे इतना change हो रहा है, right? So now it is working fine. Now we are going to the next level of challenges कि जो data collect हो रहा है उसको हम लोग कैसे और meaningful बनाएं. So many data that we generate in the classroom about students' learning outcomes. So उसका value क्या है? Like there are 40 students in the class. तो कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, तो बच्चा खराब कर रहा है. आज अच्छा किया, कल खराब किया. So how does that pattern help us understand and make improvements right on spot? Right. So Pankaj, interestingly, you spoke about the fact कि जैसे लोग बोले, टीचर्स बोले, आप ही आते हैं, बाकी एडटेक कंपनीज तो नहीं आते. And of course, the core of any proposition always lies in solving the genuine pain or the problem that the user has. And especially you spoke about the fact that things had to be internet free as you went to the ground and realized that, especially in India. And also you noticed that the UI had to be designed keeping those folks in mind. So what were some of the early reactions that you got as you were making those changes, and who were the users and what was coming out of it? So before we answer this question, I would also explain what exactly we do, so that the audience understands what we do. And then I think in that context, I'll try to answer your questions as well. So what we do is basically enable interactivity and engagement in the classrooms by involving every student in the classroom. So let us imagine this situation. Let's not talk about technology for a moment. Let us say कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं. एक टीचर ने आके 40 मिनट का पीरियड पढ़ाया. 40 minutes period is going on. Now in that period, teacher has to come and revise. She has to teach. She has to ensure जो आज पढ़ाया है वो भी सीख गए बच्चे. So we say teachers को कि आप लोग पढ़ाइए. Last के 5 या 10 मिनट जो है आप image quickly assess कीजिए बच्चों का learning level. So as of now, what they do is they will ask few questions कि अरे बताओ पूर्ण संख्या की पहली संख्या क्या होती है.
0, 1, whatever. Then few students will raise their hand and teachers will say, ठीक है, बच्चों को समझ में आता नहीं आता, and they will move on. Data is lost. What we do is we ensure कि जब टीचर क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण संख्या की पहली नंबर क्या होती है, तो every student's response should be collected, right? Every student's response should be collected, and that data has to be stored somewhere for teachers to reflect on it later on, or for the data to connect to other data points later on. So this is what we want. इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? We have built a combination of a software and hardware. सॉफ्टवेयर तो टीचर के एप्लीकेशन हो गए, स्मार्टफोन एप्लीकेशन या कंप्यूटर, क्लासरूम में कंप्यूटर तो कंप्यूटर पर लगा दिया उसको। और बच्चों के लिए क्या हम लोगों ने एक स्मॉल रिमोट जैसा डिवाइस बनाया है, उसको टेक्निकली क्लिकर बोलते हैं, क्लिकर या फिर स्टूडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम बोलते हैं। क्लिकर और स्टूडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ, प्रूवन टेक्नोलॉजी है, प्रूवन आइडिया ऑफ मेकिंग क्लासरूम्स इंटरैक्टिव। सो हम सिमिलर टू जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आता है, करेक्ट। तो केबीसी, मान लीजिए केबीसी में जब ऑडियंस पोल होता है तो हर ऑडियंस के पास एक वो बटन दबाने वाली होती है ना, तो वैसे कुछ समझ लीजिए। लेकिन वो आई थिंक इट इज मोर एडवांस्ड इन आवर केस बिकॉज वी यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड हमारे केस में क्या है कि वी आर आवर क्लिकर्स एक्चुअली इंटरफेस विद द स्मार्टफोन। अमिताभ बच्चन जी के केस में क्या होता है कि वो केबीसी के शो में जो सारे क्लिकर्स होते हैं वो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, विच इज अ वेरी ओल्ड कंप्यूटर जी से कनेक्ट होते हैं। और हमारे केस में क्या है कि स्मार्टफोन जी से कनेक्ट होते हैं, जो कि क्लासरूम में टीचर के पास होता है। तो हम लोग वो रिमोट देते हैं बच्चों को और टीचर के पास एप्लीकेशन होता है। टीचर ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारे ऐप पे आके वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और सारे बच्चे अपने क्लिकर्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। हर बच्चे का रिस्पॉन्स, पीछे बैठा बच्चा है, आगे बैठा बच्चा है, कहीं भी बैठा बच्चा है क्लास के अंदर, सबका रिस्पॉन्स टीचर के स्क्रीन पे इमीडिएटली आ जाता है। सो ये हम लोग बात कर रहे थे कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। तो वो पॉसिबल है अभी। और प्लस क्या, वो डेटा सेव हो जाता है टीचर के स्मार्टफोन पे। एंड देन टुमारो ऑल्सो व्हेन द टीचर डज सिमिलर सेट ऑफ एक्सरसाइज, देन शी कैन सी, अरे कल तो इस बच्चे ने गलत क्वेश्चंस किया था सॉल्व, आज भी गलत कर रहा है। So that interconnectivity is also there, and all the data is of course stored on the teacher's smartphone, then slowly goes to the cloud also, जहाँ पे बाकी जो अपने अधिकारी लोग होते हैं या फिर इवन जब बच्चे घर जाते हैं तो घर पे पेरेंट्स के फोन पे भी अपने क्लास के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सिस्टम है जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो कि टीचर के पास रहता है, बच्चों के पास घर पे मिल सकता है, बच्चों के पेरेंट्स के फोन पे, और अधिकारी के पास भी एक डैशबोर्ड होता है या फिर एप्लीकेशन होता है, और बच्चों के पास एक क्लिकर होता है। पंकज, जो मेरे दिमाग में एक इमेज आ रही है, बेसिकली टीचर ने सवाल पूछा, बच्चों ने क्लिकर यूज करके जवाब दिया, और अब एक तरह से फिजिकली अगर मैं ये पहले कर रहा होता बिफोर दिस, टीचर ने देखा तो होता कि कौन सा बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है या जवाब दे रहा है, बट टीचर एक मेंटली कितने बच्चों को रिकॉल कर लेगा कि किसने क्या जवाब दिया, किस जगह प्रॉब्लम आ रहा है, वगैरह वगैरह। This will be something like this, which is very focused, pinpointed in terms of saying कि ये बच्चा इस चीज का ये जवाब दे रहा है, and teacher has that data, and because that data is there over time, teacher can even see trends in terms of how every child is shaping in terms of their. Correct. Also क्या ना गौरव, what happens is कि डेटा एक दिन का देख क्या बोलोगे ठीक है, क्या वैल्यू इसका, लेकिन एक दिन का डेटा नहीं, आप 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का डेटा देखो, तो मैं किसी भी स्टूडेंट का प्रोफाइल पुल करके देख सकता हूँ कि ओवर टाइम इस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या क्या टॉपिक्स वीक है, क्या क्या टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है। और इसका हमने सोचा भी नहीं था जब हम ऑन द ग्राउंड गए, व्हेन वी मेट द अधिकारीज, द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे टोल्ड अरे ये तो बड़ा अच्छा टूल है, इसके थ्रू तो हम लोग बच्चों का तो बच्चों की गुणवत्ता का तो हम लोग मूल्यांकन करते ही हैं, साथ साथ में टीचर्स के भी स्किल्स का हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। तो टीचर ट्रेनिंग जब होती है तो उसमें क्या है कि दे विल सी कि अच्छा इस क्लस्टर्स में, इस ब्लॉक्स में ये टॉपिक्स पे टीचर्स वीक थे, क्योंकि बच्चे अगर वीक है इसका मतलब कि टीचर भी रिलेटिवली वी कैन डू अ कोरिलेशन कि टीचर्स भी शायद उस सब्जेक्ट्स में वीक होंगे या उस टॉपिक्स में वीक होंगे। तो अगर हम लोग टीचर को उन टॉपिक्स पे ट्रेन कराएं पर्टिकुलरली, तो कितना पावरफुल ट्रेनिंग रहेगा वो। एंड देन वी कैन आल्सो सी कि कितना इंपैक्ट आया नेक्स्ट ईयर या 6 महीने के बाद। तो हमारा क्या है ना कि हम लोग बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, हम लोग रोड नहीं बना रहे हैं। रोड में क्या है कि रोड बनाएंगे तो रोड टूट जाएगा तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, बच्चों का भविष्य एक बार टूट गया तो फिक्स नहीं हो सकता ये। तो बच्चों का भविष्य जो है हर दिन बनता है एक क्लासरूम के अंदर, तो हर दिन हम लोगों को डेटा कलेक्ट होना है कि कहाँ पे ये चीजें उड़ रही हैं, अच्छी हो रही हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को राइट टाइम पे इंटरवेंशन लगाना पड़ेगा कि रेमेडियल क्या करना है आपको, अरे एटलीस्ट पता तो लगे कि क्या कहाँ पे खराब है, उसके बाद हम लोग कुछ एक्शन लेंगे ना। I am learning a lot in this conversation. Hope you are too. Which questions would you like me to ask? What areas would you like me to explore further? Please write to me at gaurav@takestep.org. तो पंकज, ये करते समय एक तो अधिकारियों का रिएक्शन हो गया, एंड आई थिंक इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि दे वर सीइंग द डेटा एंड हेंस दे कुड नाउ थिंक अबाउट डूइंग टारगेटेड टीचर ट्रेनिंग्स।
based on that data? Because as you rightly said, it's not just a reflection of the student skill, but also the teacher's competence. Correct. What were the reactions that you saw coming from the teachers and from the students as they were using this? स्टूडेंट्स का तो आप पूछो ही मत, वो तो टीचर्स को तंग कर दिए हैं आप कि भाई सर आप हर दिन सर कीजिए वाला, अच्छा, क्योंकि उनको लगता है कि गेम हो रहा है। और ये मेरे लिए अच्छा रियलाइजेशन था कि जनरली बच्चे जो होते हैं एग्जाम से डरते हैं, दे आर स्केयर्ड ऑफ एग्जाम्स जनरली स्पीकिंग। लेकिन हमने जो देखा कि दे टोल्ड अस सर हम लोगों को एग्जाम से डर लगता है लेकिन इससे डर लगता नहीं है, तो दे फाउंड इट मोर साइकोलॉजिकली सेफ। दे फेल्ट कि यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो एक्चुअली टीचर ऑल्सो सेज कि भाई तुम बच्चों ने गलत किया है सही किया है, तो दे फील इट लाइक मोर ऑफ अ गेम। तो क्या बच्चे हंसते हंसते खेलते खेलते बच्चे सीख लेते हैं। दिस इज व्हाट वी रियलाइज्ड एंड इट हैज बीन अक्रॉस द सेम रिएक्शन। हमें एक भी ऐसा बच्चा मिला नहीं जो बोलेगा सर क्यों लगा दिया सर इसको आपने, इससे हमें स्ट्रेस बढ़ गया या सर हमें मजा नहीं आ रहा। एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, और स्पेशली आफ्टरनून क्लास में हमने देखा कि कोई बच्चा सोता नहीं है, एवरीबॉडी इज अलर्ट। और जब टीचर क्या करती है कभी कभी क्लास होने से पहले जब बांट देती है ना सबको रिमोट, तो हर बच्चे का अटेंशन ऐसे रहता है लाइक वॉचिंग कि टीचर क्या पढ़ा रही, सुनो सुनो सुनो, क्योंकि क्वेश्चन बाद में पूछा जाएगा। तो दे आर मोर अलर्ट, मोर अटेंटिव, ये हमने देखा है। तो फन भी है, अटेंशन भी है, दोनों। एक डायलॉग आ रहा था मेरे दिमाग में ये सुन के कि दबंग में डायलॉग था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उसी तरह यहाँ पे बच्चों को सवाल से डर नहीं लगता, एग्जाम से शायद लगता है। बिल्कुल सही बोला आपने, सवाल से डर लगता नहीं है, एग्जाम से लगता है, क्योंकि एग्जाम में हल्का सा वैसा मूड रहता है कि भाई स्कोर आएगा ये आएगा। यहाँ पे कोई स्कोर आता नहीं है सच। हर एक सवाल के बाद टीचर बताती है कि जवाब सही क्या है, आपने क्या किया, फिर पूछ लेंगे भाई आपने ये क्यों जवाब दिया। तो दे फील मोर ऑफ अ सेफ प्लेस टू रिस्पॉन्ड। एंड बड़ा अच्छा डायलॉग बताया आपने। और टीचर्स का रिएक्शन क्या है, टीचर्स के केस में क्या है कि एक हमने शुरू में ऑब्जर्व किया, टीचर्स हल्का सा मतलब टेक्नोलॉजी को लेके थे कि भाई ये तो एक और चीज आ गया हमारे पास। और मुझे पता नहीं था काफी स्कूल्स में मतलब काफी टेक्नोलॉजीज आते हैं, टीचर्स को काफी बर्डन किया जाता था काफी टेक्नोलॉजी से कि आप ये भी यूज कीजिए वो भी यूज कीजिए। तो हमने उनको खाली ये बोला कि सर मैम हमें आप सिर्फ 5 मिनट दीजिए अपने क्लासरूम में। अगर हम लोग 5 मिनट में बच्चे बोलते हैं कि आप सर चले जाइए यहाँ से, तो हम लोग चले जाएंगे चुपचाप से। हम लोगों को एक बार टीचर का रोल अदा करने दीजिए, वी विल प्ले द क्विज, लेट अस सी व्हाट स्टूडेंट्स आर सेइंग। तो दैट वाज अ वेरी गुड वे टू एंश्योर टीचर्स माइंड शिफ्ट्स। तो टीचर ने देखा बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, उनका काम तो हल्का हो रहा है, उनको तो क्वेश्चन बनाने की जरूरत है नहीं, सारे क्वेश्चंस यहीं पे हैं जो पढ़ा रहे थे। और स्मार्टफोन से इमीडिएटली क्या ऐप खोला और चालू हो गया। ये नहीं कि भाई वो टीवी का स्विच ऑन किया फिर वो लोडिंग दिखाएगा या फिर वो कुछ होता ना कि बिजली नहीं है, वो सब कुछ है नहीं, सिंपल है। सो इन लाइक एनी इन मेनी वेज इट इज वेरी वेरी इजी टू यूज। तो टीचर्स ने काफी इसको एक्सेप्ट किया। अभी हमारे यूपी के केस में क्या हो रहा है, हर दिन हमने देखा है कि डेटा जो हमारे मिलता है हमें, हर दिन ऑन एन एवरेज 10,000 बार क्लिक होते हैं हमारे सिस्टम पे, खाली यूपी के एरिया से ही 10,000 टाइम्स स्टूडेंट्स आर क्लिकिंग इट। और इतना यूसेज हो रहा है अपने आप, और अपने आप हो रहा है, टीचर्स अपने आप करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बच्चे जो हैं वो काफी फोर्स करते हैं टीचर्स को, सर मैडम आप साथी वाला क्विज कराइए, साथी वाला क्विज कराइए, क्योंकि उनको लगता है कि हमने पढ़ाई कर लिया, अब हमें रिवाइज करना है। तो उससे काफी मतलब इम्पैक्ट आया है। तो एक तरह से बच्चों की उत्सुकता भी जाग रही है कि अब हमने पढ़ लिया है, हमें रिवाइज भी करना है, और ये फन है, मतलब एक तरह से एंजॉय करते हुए हम उस चीज का जवाब दे सकते हैं। करेक्ट। डर साइड में हो गया और एंजॉयमेंट के जरिए उनकी लर्निंग हो रही है, और वो रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, और टीचर भी उसको देख पाएगा, रिफ्लेक्ट कर पाएगा उसको। करेक्ट। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो असेसमेंट, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, और टीचर्स को भी समझाते हैं कि ये एनईपी जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके अंतर्गत में भी वहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट का काफी इंपॉर्टेंस बताया गया है। और हम लोग का जो प्रोडक्ट है, जो प्लेटफॉर्म है, उसका फंडामेंटल जो बेनिफिट है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो आप लोग भी जैसे अगर ये करेंगे तो इट इज अ वेरी गुड वे टू शो टू एनीबॉडी कि हम लोग एनईपी कंप्लायंट है, राइट। और सिंपल चीज है। और सर मैम सर आप यूज कीजिए, अगर आपको लगे कि अच्छा नहीं तो मत यूज कीजिए आप। हम लोग का कभी भी ये पीछे रहता नहीं कि मैम आप यूज कीजिए क्यों नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं। हम लोग बोलते हैं कि आप शुरू में आपको बिहेवियर चेंज तो है ही डेफिनेटली, सो एनी बिहेवियर चेंज विल टेक सम टाइम टू बी कंफर्टेबल विद। तो वो हम लोग खाली जो इनिशियल बिहेवियर चेंज के समय तक हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मत यूज कीजिए आप। Very interesting and fascinating, Pankaj. So as you even were speaking about the behavior change, right? Seeing the behavior change for an organization on the ground based on the solution created by them is a big aha moment. Right? So what was your feeling as you saw some of this happening on the ground? And how did that lead to now
shaping of future thoughts and directions? आई थिंक काफी aha मोमेंट्स थे उसमें। एक था कि टीचर्स जो हैं अपने आप उसको यूज करते हैं और मतलब इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर एनीबॉडी। गिव इट टू केबीसी या हुएवर, आई थिंक बड़ा सिंपली बच्चे समझते हैं इस चीज को। जैसे आपने बताया ना कि केबीसी जैसे, तो वैसे ही मतलब बड़ा सिंपली बच्चे समझते हैं इसको, टीचर समझते हैं क्या है। तो हमारे लिए वो भी एक aha मोमेंट था कि सिंपल है ये बड़ा। तो हम लोगों का ये एक फंडामेंटल पिलर हो गया ऑफ ऑल द फ्यूचर प्रोडक्ट प्लानिंग कि सिंपल रखना है। जहां भी अगर लगे कि कॉम्प्लेक्स होगा तो नहीं करेंगे वो काम हम लोग। तो सिंप्लिसिटी हैज बीन अ कोर वैल्यू ऑफ आवर प्रोडक्ट इनोवेशन प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वी रियलाइज कि जैसे टीचर्स या स्टूडेंट्स जो हैं उनसे आप जाके पूछो कि सर मैम या बच्चे क्या आप लोगों को चाहिए, और तो वो लोग कुछ कुछ बोलेंगे। बट आई थिंक द रियल वैल्यू कम्स व्हेन यू सिट इन द क्लासरूम एंड जस्ट ऑब्जर्व कि वो लोग जो पर्टिकुलर एक फ्लो फॉलो करते हैं ऐप में या हमारे सॉफ्टवेयर या हमारा जो भी पेडागोजी है, उसमें देयर आर सर्टेन एरियाज व्हिच कैन बी रिमूव्ड आई थिंक टू मेक इट बेटर। तो वो हम लोग बैठ के समझते हैं, उनसे पूछते नहीं है, बैठ के समझते हैं एंड देन वी आल्सो सी देयर बिहेवियर वंस वी हैव मेड द चेंजेस। तो ये सब मतलब काफी रहा है कि भाई ऑन द ग्राउंड रहना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा, अपने को यूजफुल बनाना पड़ेगा। हमारा एक कोर ऑब्जेक्टिव अभी ये भी है कि ऐसा कुछ बनाओ जो हर दिन यूज हो, कि मतलब कि हर दिन यूज हो नहीं, हर दिन यूज होने लायक चीज हो। ये बिल्ड समथिंग व्हिच दे वांट टू यूज एवरी डे। कि बेसिक मतलब बहुत सारे थॉट्स चलते हैं हमारे दिमाग में, वी हैव कंप्लीट रोड मैप। तो हम चाहते हैं कि जैसे होता है ना ब्लैक बोर्ड होता है क्लासरूम में, टीचर ऑलमोस्ट हर क्लास में ब्लैक बोर्ड यूज करता ही है। क्यों? क्योंकि ही और शी हैज टू राइट समथिंग एंड शो, इतना वैल्यू है उसका। सो हाउ डू वी बिकम द ब्लैक बोर्ड इक्विवेलेंट कि हर दिन यूज हो। तो वो एक थॉट रहता है विच इज अ वेरी डिफिकल्ट, बाय द वे वेरी डिफिकल्ट थिंग टू सॉल्व फॉर, but not impossible. Difficult है because it requires a lot of thought process, and why would somebody do that, right? अगर आप मुझे बोलो कि पंकज you do this way, आप जाके ऐसे पढ़ाइए, बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग बस ट्राई करते हैं कि समझने को उनको कि क्या है। तो हमारा टीचर को पिच पॉइंट रहता है कि सर आप लोगों के लिए टाइम बचेगा हमारे थ्रू, यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम। जो आप क्वेश्चंस बनाते हैं या लिखते हैं, आप क्यों कहीं भी जाते हैं, यू विल आपको कहीं से टाइप करना, हमारा ऐप में यूज कीजिए ना सर। आप सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, आपको उसमें क्या और डालना हमें बताइए। आपके पास हॉटलाइन नंबर है हमारा एक, उस पर आप फोन कीजिए और हमें बताइए कि आपको डालना, हम लोग डलवा देंगे इमीडिएटली। और मतलब बिकॉज वी आर स्मॉल नाउ रिलेटिवली, वी आर एबल टू गिव अ वेरी गुड सर्विस। इसको भी मुझे एक चैलेंज है कि हाउ डू वी कीप ऑन सस्टेनेबली स्केल दिस गुड सर्विस। तो वी आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग आवर कस्टमर रिलेशनशिप टीम ऑल्सो, कि भाई खाली expand नहीं करना है, but also expand by expanding the team also that can support that kind of service that we are giving right now. So, Pankaj, in fact, आपने एक काफी अच्छी बात बोली कि as you're designing things, key mantra that's how enough examples of possibilities can be showcased, co-developed or co-created with the ecosystem becomes really important, because that is what will spark imagination, spark innovation, and really help solving for different challenges. तो इससे एक लिंक सवाल, हाँ कुछ बोला। I was saying कि काफी अच्छा है ये। इसमें खाली एक चीज है कि we also need to not only show examples in the lab, we need to show examples on the ground. I request है या फिर I just think in that way कि we get folks who want to take risks to make this more real by going on the ground from the lab and seeing कि हाँ ये चीज काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, right? Of course, I think we are being at a very good speed. We have worked with Xstep. They have given us good opportunities to showcase our product to the right authorities in the NDA team, that the policy team that is working on this. But I can understand also things are taking time because they need to be assured कि सब कुछ सही है तभी जाओ उस direction में. So my personal desire है कि हल्का सा और fast speed से काम हो and go to the ground. तो वो करेंगे तो I think it will be much more, it will energize us further, and not only me but many other stakeholders, smart minds in the industry will come to this tech field. So Pankaj, it was really very interesting as a conversation, and in fact towards the end I feel the urge to ask you 2-3 very rapid fire kind of questions. Please. So one, which mistake is your favorite mistake? Favorite mistake? Yeah. I don't recall any favorite mistake, honestly. I know that... favorite learning, let's put it that way. Achha, my favorite learning would be that I think the entire smart school concept is broken. That has been a big learning for me, because people really associate smart school with smart gadgets in the classroom. And I think smart school is one where the learning is smart.
और जो भी टेक्नोलॉजीज लर्निंग पे फोकस करती हैं, कीपिंग इन माइंड द लोकल कॉन्टेक्स्ट is a good learning system. So there's a lot, I think, to be done. Not many people believe with what I'm believing right now. They feel कि नहीं smart boards होने ही चाहिए, which is a good thing, a very good accessory. But is it enough? तो वो एक very important learning मेरे लिए रहा है कि when I go to schools, ठीक है smart boards लगाएं लेकिन चलते नहीं है शायद, right? कोई उसको ऑन भी नहीं करना चाहता कि टाइम लगेगा ऑन होने में. तो वो मुझे I realized and I learned to keep it has to be very simple to use, simple to start, simple to end process. So that has been my biggest takeaway. And sometimes I fear that if I share this too many times to too many people will start connecting with the idea and they will start building what I am building, right? Which is also okay because country is so big, there are so many opportunities. But I think that is where we need to focus. Simplicity. Simplicity. And I think with probably that you've also articulated the answer to the next question that I was going to ask, which is, as a founder and in the journey, you come up with a lot of principles which are important in the decision making of the company, right? And then can create the navigation compass for the company. I think during the conversation itself, you articulated quite a few. And I just wanted to know which one is your favorite. Sounds like it's simplicity. Is there another one? Simplicity is definitely important. Second is make something that people want. Because if you make something that people don't want, there's no point of making it, honestly. So many startups fall down because this is always by research that because they work on ideas that nobody wanted. So very, very important point to keep in mind. Okay, so when I ask my team members all the time that whenever you build any feature, ask yourself and ask others, what if this feature is not there? Second, will this feature be used like a chalkboard in the classroom? At some point, not immediately, maybe. So do you see that dot connected going forward? So frequency usage is one of the criteria that I really keep in mind. You build something that people want. And lastly, the other principle I always believe in is create a pull factor, not a push factor. So pull means, again, it's all connected, that janta ko lage ki haan use karna hai mujhe. You don't tell the teacher to write on the chalkboard. They take out the chalk and they write on the chalkboard. Then they will say, duster kahan hai, right? So it is all connected. It's a pull. Sometimes I get calls from our local ground team कि सर वो लोग स्कूल में यूज नहीं करना चाहते हैं आज. बोला बिल्कुल फोर्स नहीं करोगे उनको, लेकिन जहां पे दिक्कत आएगी उनको आप वहां पे हेल्प करने प्लीज पहुंचाना. बी अवेलेबल बट डोंट डू व्हाट पीपल वांट. यस फंडामेंटल वही है ना. और अगर क्योंकि पॉइंट ये है कि हम लोग बना रहे हैं उनके लिए, अगर उनको हम पुश करके करवाएंगे तो क्या होगा, यूज तो कर लेंगे, लेकिन जब मैं नहीं हूं तो यूज नहीं करेंगे वो लोग. वैल्यू क्या हुआ? और मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, मेरा खुद का टाइम. ठीक है, वर्ल्ड विल गो ऑन, मेरा अपना टाइम लगा के मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर. और अगर वो लोग यूज नहीं करे तो भी मेरे लिए अच्छा चीज है एक्चुअली. दैट मीन्स कि दे डोंट नीड दैट थिंग, आई नीड टू थिंक अबाउट इट. अदरवाइज डेटा गेट्स क्लाउडेड. वो लोग यूज कर रहे हैं, वो हर दिन 10,000 क्लिक आ रहा है सर, राइट? तो आई विल गेट अ फॉल्स डेटा at my own level. By the way, with your answers, Pankaj, you seem to be already guessing the question that I'm going to ask, because the next question that I was going to ask was, what is the favorite question that you ask to the consumers on the ground when you go to the field and experiment with something? So of course, I pick up the thread that you want to know what people want and whether it is of value, whether they would themselves use it. But anything else that comes to you as a favorite question that you ask them? So I always ask them about how they study, what they wish they had. If they had a magic pen in their hands, what would they wish for in the context of learning? Basically, I want to understand what their needs are or what their desires are rather, right? I think technology cannot solve all of it, but it can draw inspiration from those. So, for example, in our application, we only had quizzes in the past, like quiz questions. But people said, "Ki nahi sir, quiz questions to achhe hain. If you can add some content to learn also, that would be very, very helpful. If you can add some past papers also." So basic low-hanging fruits, and we do that. So basically, I always try to understand. And I also enjoy talking to students when I go to schools. I go to morning assembly at 6:30, 7 o'clock, 7:30 to schools and address the students also many times. So I also share my own learning. जब मैं student था तो मैंने क्या गलतियां की, what did I learn, what are some of the things that are constant in my life so far. For example, एक constant है कि hard work. ये नहीं कि मैंने IIT के एग्जाम क्लियर कर लिया तो मैं हार्ड वर्क करना बंद कर दूंगा, ये मैं हार्ड वर्क चला गया तो मैं उसके बाद हार्ड वर्क करना बंद कर दूंगा. हार्ड वर्क इज समथिंग दैट हैज बीन कॉन्स्टेंटली हेल्पफुल. इट हैज टू बी देयर इन लाइफ. इंटीग्रिटी इज अनदर थिंग. तो हम लोग जो छोटे होते हैं तो वी रियली डिस्काउंट इंटीग्रिटी कि क्या है इंटीग्रिटी, इट्स इन द बुक्स थिंग. लेकिन इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, respect for each other, all these things are very, very fundamental points that we have imbibed from childhood. And it has been a very big enabler of my own journey so far. Work is work.
but these are basic elements which we need to imbibe and really work for. Because this is how we become a human being. तो वो आइडिया सी, दिस इज व्हाट आई शेयर व्हेन आई टॉक टू द स्टूडेंट्स. समझ में आया क्या बताया मैंने आपको? हाँ सर हार्ड वर्क करेंगे सर. तो दे डोंट अंडरस्टैंड इंटीग्रिटी येट, दे डोंट अंडरस्टैंड रेस्पेक्ट वाला पीस, बट आई नो दैट दे डू इट ऑलरेडी. सो आई नो कि दे डोंट हैव ऑल द आंसर्स, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, बट स्लोली अगर मैं सेम मैसेज बार बार बोलूंगा तो एटलीस्ट हेल्प्स मी रिमाइंड कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में. तो वो काफी अच्छा रहता है. एंड आई रियली एंजॉय द स्पेस. मतलब मुझे लगता नहीं कि आई वर्क 7 days a week, आई वर्क लाइक थ्रू आउट. I don't say I work, I say I'm like into it. It's in my skin now. Very, very good experience. I never get tired, by the way. Sham mein I work till 10 o'clock. I get like little bit, maybe, sort of, kya bolte hain isko, halka sa tired temporarily, but back to normal. It's just like breathing for me now. Awesome. That sounds great, Pankaj. Thank you so much for being candid. It was really a very awesome conversation, hearing your experiences, the principles that you spoke about, the aspect of simplicity, the aspect of looking at what people really want, their desires, and solving for it in a way that can sustain. And by doing so, of course, making this experience also very enjoyable for kids. So in a way, you are sparking that curiosity, sparking that imagination in children, while of course generating that data for learning, which naturally can be very useful in terms of addressing the problem that we all care about, which is improving learning outcomes of children. Thank you so much, Pankaj. Thank you for making time. It was really a pleasure talking to you. Thank you, Gaurav, for having me. I think it's a pleasure, and I really salute people like you who take out time to do this for the community. I'm looking forward to hear your other podcasts as well going forward, and I wish you all the best as well for doing this. And we hope to cross common roads again in the future. And again, wish you all the best. Thank you so much for having me. Thank you so much, Pankaj. Really appreciate it. I unlocked a lot of possibilities in this conversation. Hope it did the same for you. Which leaders would you like me to meet? What would you like me to ask them? Please write to me at gaurav@takestep.org.